Good evening to everyone. Welcome back to our GAUSSIAN tutorial. So previous class रे mechanics रा हमें fast moment of inertia कौन ओके केमती हमें गोटे सिस्टम ऑफ पार्टिकल रो सेंटर ऑफ मास रो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास रो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास रो लिनियर मोमेंटम एंड आल्सो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें केमती लिखंदी एटा हमें सीखि जाइथिले ओके तार डेरिवेशन के हमें करथिले ओके तो आज हमें देखिबा केमती सिस्टम ऑफ पार्टिकल रो काइनेटिक एनर्जी लिखिबा ओके तो राइट डाउन काइनेटिक एनर्जी of a system of particles. System of particles. Okay. Let's suppose our coordinate system is x, y, z. Okay. And this origin is O. Okay. Let's suppose system रा center of mass होची 8. The point center of mass. Okay. तारा position O रू reference to O केते ना RC vector. Okay. Let's suppose गोटे आयत पार्टिकल अच्छी गोटे पार्टिकल अच्छी आयत पार्टिकल ओके तार पोजीशन कोऑर्डिनेट केते ना RI तार पोजीशन कोऑर्डिनेट केते ना RI वेक्टर ओके तो सेंटर ऑफ मास रू आयत पार्टिकल को कोऑर्डिनेट को हमें कौन लिखंती ना RI डैश ओके RI डैश ओके से एला RC एला RI सेंटर ऑफ मास रो आयत पार्टिकल को पोजीशन है लगे RI डैश ओके तो राइट डाउन consider a system of particles system of particles of masses mi where I is equal to 1 2 up to n okay let their position vector be denoted by RI vector I is equal to 1 2 up to n okay relative to a fixed origin okay relative to its relative to a fixed origin O okay let RC be the position vector around the center of mass of the system with respect to O and RI dash जहाँ पे डायग्राम रे कले सेटा हम लिखचंती and RI dash be the position vector of ith particle with respect to the center of mass रू जो ith particle को position हला RI dash बाकी center of mass हला RC RI हला ith particle कौन position from the origin okay then from the triangle law of vector addition हमें जानचंती RI vector is equal to RC vector plus RI dash vector okay तो एटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओके जानछन हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन प्लस 2 समस्या जानछन ओके देन हमें इक्वेशन को हमें कोन करबा डेरिवेटिव करबा सो डिफरेंशिएटिंग with respect to time
we get dri vector upon dt is equal to drc vector upon dt plus dri dash vector upon dt. Okay, or vi vector is equal to vc plus vi dash. Okay, so dri है कौन आयत पार्टिकल वेलोसिटी, ये सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी, ये कार वेलोसिटी ऑफ द आयत पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. ओके, आपको दे देबा में इक्वेशन 1. क्लियर? ओके, तो लिख देबा where vi vector is equal to sorry velocity of ith particle relative to O. Vc है drc vector upon dt which is equal to velocity of center of mass relative to O. Okay, and vi dash is equal to dri dash upon dt velocity of ith particle with respect to center of mass. Okay, by relative to center of mass. Okay, okay, then the kinetic energy of the ith particle hame likhiba. So the kinetic energy of the ith particle is ki. Kinetic energy को हमें ki लिखिबा हाफ mi से पार्टिकल मास आउ से ith पार्टिकल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ओके, तो k इज इक्वल टू ताले टोटल काइनेटिक एनर्जी कोन हबो समेशन ओवर ऑल पार्टिकल ki. ओके, समेशन कोड कोड जिवो ना 1 टू n पर्यंत, 1 टू अप टू n पर्यंत. ओके, समेशन ओवर i ki जगह रे हम कोन लिखिबा ना हाफ mi vi रा स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिखिबा समेशन i हाफ mi vi स्क्वायर को लिखिबी vi वेक्टर डॉट vi वेक्टर. क्लियर? ओके, तो देखो हाफ समेशन ओवर i mi vi जगह में कोन लिख परिबी देखलु फ्रॉम इक्वेशन 1 लु vi जगह में कोन लिख परिबी vc प्लस vi डैश. ओके, तो vi जगह में कोन लिखिबी vc प्लस vi डैश डॉट vc प्लस vi डैश. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1. ओके, then half summation i. ओके, मल्टीप्लाई करिबा mi मल्टीप्लाई करिबा ये vc रा स्क्वायर. ओके, प्लस vi डैश रा स्क्वायर प्लस 2 vc डॉट vi डैश. ओके, अपाई ना a प्लस b. ओके, a प्लस a डॉट a वेक्टर हम लिखंदी a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर कोन लिखंदी ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b. ओके, वेक्टर हम पढ़छन. ओके, तो नेक्स्ट हाफ समेशन ओवर i. ओके, बा mi. ओके, देन ओके, सो ये वाला mi vc रा स्क्वायर. ओके, vc स्क्वायर प्लस हाफ समेशन ओवर i mi vi डैश रा स्क्वायर. ओके, प्लस vc जेतु i ऊपर डिपेंड करने ये बाहर पड़े आसला समेशन बाहर को समेशन ओवर i mi vi डैश vi डैश. ओके, सो देखो 2 एटी 2 2 कैंसिल आउट हे गला vc बाहर पड़े आसला. सो चारटा टर्म पाइले हमें सॉरी तीनटा टर्म एटी अछि तीनटा टर्म पाइले. क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट स्टेप देखो
K is equal to total kinetic energy is equal to half. Okay, माने ला कौन total mass m v0 square center of mass plus half summation over I mi vi dash square plus vc dot d by dt of summation over I mi is ri vector. Okay, ri dash vi अच्छी तो डेरिवेटिव नहीं आसे बाहर को सो कोन आसो m तो कांस्टेंट तो ri डॉट पड़े आसो सो डेरिवेटिव नहीं आसे माने कोन रहबो ri डैश रहबो. ओके, तो एठी हम जानि चंती ए टर्म टा हम कहितली प्रीवियस क्लास रे ए टर्म टा कोन कोन हमें मोमेंटा. ओके, जो हमें कहि छी m1 कोन सेंटर ऑफ मास रिलेटिव टू कोन वे मोमेंटा कोन हबो वैनिश हे जिवो. ओके, सो हम जानि चंती समेशन ओवर i mi ri डैश is equal to 0. mi ri dash is equal to 0. ताले काइनेटिक एनर्जी को दिटा टर्म आसला k is equal to half capital M vc square plus half summation over I mi vi dash square. Okay, काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेस. तो काइनेटिक एनर्जी ताले कोन हला the kinetic energy of a system of particle is equal to the kinetic energy of center of mass and plus भी लिखि परिबा plus kinetic energy of the particles about center. Okay, so ए टर्म टा एडिशनल kinetic energy of center of mass आ कोन ना एक्स्ट्रा गोटे टर्म आसला कोन kinetic energy कोन kinetic energy of the particle about the center. ओके ओके, तो एबे देखिबा हमें सब जिंस हमें देखचंती जहां पे हमें टर्म यूज करंती क्लासिकल मैकेनिक्स रे वेलोसिटी एक्सेलरेशन लिनियर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंगुलर मोमेंटम. ओके, टॉर्क ए सब जिंस को हमें देखिबा. ओके, केमिति लेखा हो तार एक्सप्रेशन आगे एटा को बुझिबा देन हमें मोमेंटम इनर्शिया बे डिस्क्रीट सिस्टम पे पढचंती देन हमें कंटीन्यूअस सिस्टम पे भी पढी. ओके ओके, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल angular momentum of a system of particle. ओके, तो सिमिलरली सही टाइप रा हमें वर्डिंग लिखिबा उतरे भी लिखतबा किछि प्रॉब्लम नहीं. ओके, तमे भी लिखो. ओके, तो मु जेतु लिख परछु तमे के लिख परिबोनी. ओके, तमे भी लिखो consider a system of n particles 1 2 up to n. Just a minute. Okay, तो देखो consider a system of n particle 1 to n of masses m1 m2 up to mn respectively. Okay. Let pi be the linear momentum of the ith particle
ith particle whose position vector relative to an arbitrary origin O each ri. ओके जेमिति हमें सब वर्डिंग लिखुचंती सबुथिरे सेमिति हमें एभळे भी लिखिबा. ओके लेट rc be the position vector of center of mass relative to O and ri dash be the position vector of ith particle relative to center of mass. ओके बेसिकली ये जिनसा हमें लिखंती तमे जानि गले. ओके ओके सो हमें एमिति जानचंदी देन ri is equal to previous diagram रे देखो ri is equal to केते हबो ना rc वेक्टर प्लस ri डैश वेक्टर. ओके इक्वेशन 1 दे परिबो. ओके देन आल्सो हमें डिफरेंशिएट करबा dri वेक्टर अपॉन dt is equal to drc upon dt plus dri dash upon dt. Okay, so vi is equal to vc plus vi dash. Okay, basically it हमें इक्वेशन 2 दे परिबा. ओके तो एबे हमें लिनियर मोमेंटम देखिबा. गोटे पार्टिकुलर देखिबा देन सिस्टम ऑफ पार्टिकुलर देखिबा देन एंगुलर मोमेंटम देखिबा. ओके बिकॉज़ हमें एंगुलर मोमेंटम काढिया पूर्व हमको लिनियर मोमेंटम दरकार. ओके so the linear momentum of the ith particle is pi is equal to mi vi. Okay, mass into तार velocity say particle. So the angular momentum of the ith particle about o मन रखिबो about o रे हमें बाहर करछंदी. ओके about o is ओके हम जानछंदी li is equal to कोन हबो ना r cross p ri cross pi. Okay, then the total angular momentum of the system of the system about o is equal to vector sum of the angular momentum of the individual particle. Okay, obviously गोटे पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम बाहर करिबा देन ताकर वेक्टर सम करिबा. सो l वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ओवर i li वेक्टर is equal to summation over I is equal to 1 to n ri vector cross pi vector. Okay, summation over I is equal to 1 to n ri vector cross p जगह कौन पकेबा mi vi vector. Okay, okay, so summation over I ri vector को ri vector रहला cross mi vi जगह में कौन पुट कर परिबी vc plus vi dash. ओके ओके देखो
इज इक्वल टू समेशन ओवर आई। ओके, तो देखो एम टाक बाहर को आस पारि एम आई। ओके, तो देखो ये कौन अच्छी आर सी प्लस आर आई डैश। ओके, सो देखो आर आई को मुझे लिख पारि एम आई को बाहर को आस पाइली। ओके, तो आर आई को मुझे लिख पारि आर सी कैपिटल आर सी प्लस आर आई डैश क्रॉस वी सी प्लस वी आई डैश। ओके, आर आई जगह में वैल्यू पुट करली एम आई कांस्टेंट कौन मास तक मु बाहर को आसे। क्लियर? ओके, तो देखो समेशन ओवर आई एम आई हम मल्टीप्लाई करबा। ओके, सो आर सी क्रॉस वी सी प्लस आर सी क्रॉस वी आई वेक्टर प्लस आर आई डैश क्रॉस वी सी वेक्टर प्लस आर आई डैश क्रॉस वी आई वेक्टर डैश। ओके, तो आम चारिटा गोटे दीटा तीनटा चारिटा टर्म पाई। ओके, तो देन समेशन ओवर आई एम आई। ओके, सो ये जो आई इनवॉल्व नहीं तो आपको मैं गोटे क्वांटिटी लिखिदेली सॉरी आरसी वेक्टर क्रॉस वीसी वेक्टर। ओके, आरसी वेक्टर क्रॉस वीसी वेक्टर प्लस आरसी को जेतु नहीं ये डिपेंडेंट आई ऊपर ताक मु बाहर को आसली क्रॉस समेशन ओवर आई एम आई मल्टीप्लाई हला एम आई वी आई वेक्टर डैश। ओके, प्लस इट सेमती समेशन ओवर आई एम आई आर आई डैश क्रॉस VC। ओके, क्रॉस VC। ओके, देन लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कौन अच्छी समेशन ओवर i इज इक्वल टू 1 टू n बा समेशन ओवर i लिखले हम बुझी जिबा i इज इक्वल टू 1 टू n। ओके, तो आर आई डैश क्रॉस एम आई देखो ये मल्टीप्लाई है एम आई वी आई डैश। ओके, वी आई डैश। ओके, सो ये भी हमें चार्टा टर्म पाई गले। ओके, देन ये हमें देखो ये चार्टा टर्म केते कैंसिल हबो। देखो समेशन ओवर आई एम आई इज इक्वल टू कैपिटल एम टोटल मास इज इक्वल टू कैपिटल एम जोटा हमें कहि परिबा टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ओके, टोटल मास ऑफ द सिस्टम हमें पूरा बेसिक रु जाई पढ़िबा जो पिला माने किछ भी जानि न से माने एडी ऑब्वियसली बेनिफिटेड हो। ओके, so we know that okay, so mass momenta mo कहथली mass momenta summation over I m I r I dash is equal to 0। so summation over I m I v I dash को लिख परिबी d by dt of summation over I 1 to n एडी कोन लिखा हबो देखो dt लिखा है तो एम आई लिखा वी आई डैश लिखा है माने आर आई डैश। ओके, सो ए टर्म कौन एक्चुअली 0। सो ए टर्म कौन हो 0 हो। ओके, ताले को टर्म 0 होला देखो फास्ट एम आई आर आई डैश कोडी अछि ना ए टर्म 0 होला। ओके, आउ एम आई वी आई डैश कोडी अछि एटा अछि एम आई वी आई डैश एटा भी 0 हो गला। ओके, ओके, देखो एम आई वी आई डैश ए टर्म 0। ओके, एटी आर आई सहित क्रॉस होके अछि। ओके, आको हम बाहर को आस परिबानी। ओके, सेति में एटा 0 होई परिबो नाही। सो दीटा टर्म होइला एटा गोटे टर्म आउ एटा गोटे टर्म। ओके, सो दीटा टर्म को लिखिबा हम टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर सी क्रॉस देखो एटी कोन अछि आर सी को मु बाहर को आसली आर सी एम आई को मु भीतर बसैली। ओके, तो एम आई रो समेशन कोन एम सो एम इनटू वी सी सो एटी लिख परिमी एम इनटू VC वेक्टर। ओके, ओके, प्लस समेशन ओवर आई ओके आर आई डैश क्रॉस एम आई वी आई डैश को हम कौन लिखा पी आई डैश। ओके, ओके,
So एटा हमरो टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r क्रॉस ये हला pc हला लिनियर मोमेंट कोन लिनियर मोमेंटम कहार ना सेंटर ऑफ मास प्लस ये देखो कोन ना ri डैश कहार सेंटर ऑफ मास रो पोजीशन सेंटर ऑफ मास थारु पोजीशन ओके आयत पार्टिकल लो आउ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ताले एटा जोटा बाहरला समेशन ओवर i एटा हबो li डैश because with respect to center of mass frame okay তাহলে আমি এটা লিখ পারিবা li dash okay so li dash here li dash is equal to ri dash cross pi dash is equal to angular momentum kahar of ith particle about center of mass because सबुरा dash prime frame रे हमें नउचंदी okay okay so summation over I is equal to 1 to n li dash is equal to l vector dash सब particle पे कोन हिजबो total angular momentum dash prime frame रे बा center of mass frame रे okay so ताहले हमें लिख परिबा l dash is the angular momentum of the system about center of mass okay তাহলে তো দেখো এটি আমি কোন নিতিলে rc क्रॉस pc ओके तो m আমি জানছন্তি m আউ vc ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু কোন হবো pc ভেক্টর ओके is the linear momentum of the center is the linear momentum of the center of mass তাহলে আমি লিখি পারিবা rc is equal sorry l total angular momentum is equal to rc क्रॉस एटी m vc जाय कोन लिखिबा pc प्लस ओके प्लस एला गोटे प्लस l डैश ओके तो एटा हिजबो कोन ना l वेक्टर इज इक्वल टू l c लिखिबा हमें lc प्लस l प्राइम ओके आ माने कोन lc और l प्राइम कोन देखो angular momentum of center of mass about o angular momentum of the system about center of mass तो हमें लिखि दबा एटी वार्डिंग रे 10 the angular momentum of a system of particles about the origin O is equal to the angular momentum of the center of mass about O plus the angular momentum of the system about center of mass okay तो आमे केमिति कोन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन करबा सो आमे जानि ओके ओके तो एबे हमें पढिबा कंजर्वेशन थ्योरम सो राइट डाउन हमको बहुत किछि पढिबार अछि सो हमको टिके फास्ट दिबा पे पढिबो हमें सब कंप्लीट करबा ओके फर्स्ट टिके रेगुलर हमरो क्लास हबो ओके फ्रीक्वेंटली क्लास चलिबा एबे कंजर्वेशन थ्योरम ओके देखो कंजर्वेशन थ्योरम कंजर्वेशन कोन आछि ना कंजर्व क्वांटिटी रो कंजर्वेशन थ्योरम आछि कंजर्व क्वांटिटी का कहबा तो राइट डाउन the quantity which remains constant in time
is called a conserved quantity. Conserved quantity. तो कंजर्वेशन थ्योरम कौन अच्छी ना तीनटा थ्योरम अच्छी. ओके क्लासिकल मेकानिक्स रो तीनटा कंजर्वेशन थ्योरम इंपोर्टेंट. फर्स्ट ला कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ बा कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट. एंगुलर मोमेंट. ओके ओके तो फास्ट आम देखा कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. सो फास्ट क्वांटिटी है कंजर्वेशन ऑफ linear momentum. Okay. According to Newton's second law, so write down. According to Newton's second law, F external force is equal to mass into acceleration. Okay, mass into acceleration. Acceleration क्या कौन लिखिबा ना center of mass रो double dot. Okay, so external force is equal to mass total mass into center of mass रो acceleration. Okay, is equal to जोटा कि हमें already पढ़ी चंदी एटा. Okay, एटा हमें already derive कर चंदी equation हम मोतन लो m into. Okay, so गोटे डेरिवेटिव को मु रखी की आ गोटे को मु लिखि परिबी डॉट rc डॉट बा m d rc डॉट को हम कोन लिखिबा vc सेंटर ऑफ मास रो कोन वेलोसिटी dt. तो बेसिकली vc m को हम भितर को नै जिबा जेतु m गोटे कांस्टेंट. ओके सो f external force is equal to d by dt of m into vc. m into vc हमें जानचंदी केते ना d by dt of vc बा सेंटर ऑफ मास रो मोमेंटम. ओके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. so external force is equal to rate of change of momentum. Okay, so where p vector is equal to mvc is the total linear momentum of the system. Okay, if I'm going to condition if f external force is equal to 0 then dp upon dt is also 0. Okay, and p is constant, p vector is constant. Obviously what constant derivative ही 0 ही परिबो. Constant in time with respect to time रे कोन हो constant हो. Okay okay if the net external force on the system okay if the net external force on system of particle is 0 then the total linear momentum of the system remains constant in time. Okay okay तो এই कंडीशन को हमें कहबा कोन ना कंजर्वेशन थ्योरम. दिस इज नोन as conservation of linear moment.
तो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स और मोमेंटम दिटांक कोन वेक्टर क्वांटिटी तो आमे देखिबा वेक्टर कंपोनेंट केमती कोन चेंज होनी बा कांस्टेंट होची तो इन कार्टेशियन बा इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम rectangular coordinate system in rectangular coordinate system p can be written as okay p को हमें केमती लिख परिबा p vector is equal to px I cap plus py j cap plus pz k cap okay तो बेसिकली p वेक्टर को हमें px I cap plus py j cap plus pz k cap लिख परिबा ओके तो जेतु p कांस्टेंट हला टोटल टा जदी कांस्टेंट हला ऑब्वियसली px भी कांस्टेंट हबो py भी कांस्टेंट हबो pz भी कांस्टेंट ओके तो हमें कहि परिबा px is equal to constant py is equal to constant and pz is equal to constant okay if I would condition if external is equal to not 0 but one of its component is 0 okay then the corresponding component of kara na linear momentum the corresponding component of linear momentum is conserved okay for example if external if let's suppose if external x component is equal to 0 if y not equal to 0 and if z also not equal to 0 okay এই কেস রে only px যেহেতু x component external force র 0 so px constant but py and pz are not conserved okay this is called conservation of linear moment okay okay so एबे हम देखिबा देखो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम देखिले ओके सो एबे हम देखिबा कंजर्वेशन ऑफ कोन सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखिबा ओके सो टाइम अछि तो बेसी मु क्लास करबिनी देखो बेसिकली क्लास से 50 टू 50 45 टू 50 भितरे क्लास हमर रहइबो ओके ओके तो राइट डाउन conservation of energy of total energy भी लिख पारिबो of total energy which is equal to kinetic energy plus potential energy okay okay तो consider say particle say same thing तमे लिखिबो okay say same thing it लिखिबा हमें nothing change okay so okay same wording में लिखिबा okay same wording लिखि दबो तमे okay माउ लिखुनी रिपीट करनी okay so due to time shortage okay so एटी हम लिखिबा देखो जदि गोटे सिस्टम ऊपर किछि फोर्स पडुची ऑब्वियसली जदि डिस्प्लेसमेंट से किछि करूची ताले वर्क डन हबो तो if due to action of forces the system is displaced from position A to position B okay then the work done on the system
by the forces acting on it each. Okay, so let's suppose गोटे force apply hela. Okay, force act hela का ऊपर गोटे system of particle ऊपर या फॉर लेकिन से A रू B पोजीशन को गला. Okay, so then work done from A to B is equal to work done is equal to हमें जानते हैं F dot ds. Okay, so summation over I total work done माने गोटे particle जहाँ displacement हला summation over करिबा हो कि नहीं, summation over A to V, A to B. Okay, Fi dot dri. Okay, तो ये हला गोटे पार्टिकल, ये हला गोटे पार्टिकल वर्क डन. देन समेशन कले हमें टोटल पार्टिकल वर्क डन बस सिस्टम रो वर्क डन में पाइ छै. वेयर Fi vector is equal to total force is equal to external force plus internal force जोटा कि हमें काली पढ़िथिले k is equal to 1 to n Fik. Okay, I not equal to k. Okay, same interaction होबनी. एटा तले कोन is the net force acting on ith particle and di तो जानते हैं डिस्प्लेसमेंट, सो लिखिबा दरकार नहीं. सो di is the displacement of the ith particle. Okay, so WAV, now WAV को हम लिख परिबा summation over I. Okay, so A to B Fi external force dri. Okay, dot plus summation over I. देखो एठी गोटे समेशन थिला. देखो ई Fi जगह रे मु एटा को पुट कर देली. ओके, सो एटा को पुट करली मु. तो एठी गोटे समेशन I अछि, एठी समेशन k अछि. ओके, सो मैं लिखबी समेशन I आउ k पुट जिवो 1 to n जिवो. ओके, दुटा को 1 to n जिवो. I not equal to k. ओके, ताले इंटरेक्शन फोर्स कोन ना A to B Fik वेक्टर डॉट dri वेक्टर. ओके, दुटा टर्म में पाइले. ओके, तो हमको इवैल्यूएट करिया पई WAB हमको फोर्स रो फॉर्म माने कोन न्यूटन सेकंड ला अप्लाई करिया पई पड़िबो. ओके, सो राइट डाउन. so now Fi vector is equal to mass into acceleration. so mi acceleration को लिखिबा rate of change of velocity of ith particle. आकु हम लिखिबा that implies हमें लिख परिबा. देखो dri vector is equal to vi dt because vi is equal to dri by dt. so dri को हम लिख परिबा vi dt. okay, so vi dt. okay, तो देखो तो ये हम लिखिबा WAB is equal to summation over I A to B. okay, तो Fi जगह रे कौन पुट करिबा. देखो Fi जगह रे कौन पुट करिबा Fi एटा देखो Fi अछि सॉरी हां F कोन अछि F external. okay, so हमें फर्स्ट पुट करिबा Fi टोटल फोर्स. okay, टोटल फोर्स Fi जो ए एक्सप्रेशन लेथिला. देखो 80 डायरेक्ट 80. तो ये जगह हम पकेबा कोन ना Fi जगह हम कोन पकेबी ना लिखली मास इनटू एक्सेलरेशन mi इनटू एक्सेलरेशन लगे dvi अपॉन dt. ये वाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dri जगह कोन पकेबी ना vi dt इनटू dt. ओके, तो देखो समेशन ओवर I A to B mi vi. ओके, देखो एठी dt कैंसिल आउट हो गला. ओके, dt आउ dt कैंसिल आउट हो गला. मो एठी लिख परिबी vi डॉट a डॉट b इक्वल टू b डॉट a. सो dvi ओके एमति लिख परिबी इज इक्वल टू समेशन ओवर I A to B. ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ हाफ mi vi रो स्क्वायर आपको जदि डेरिवेटिव करबा ए क्वांटिटी में पाइ जिबा. बिकॉज़ mi बाहर पळे आसीबो कांस्टेंट, vi रो डेरिवेटिव हला 2vi into dvi. तो 2 ये हाफ कटि गला 2 रे. सो vi डॉट dvi. ओके, तो
इट एक्चुअली कौन ना काइनेटिक एनर्जी समेशन ओवर आई ए टू बी ओके डी के आई काइनेटिक एनर्जी के आई ओके कौन पाई ना के आई को आम लिखती हाफ एम आई वी आई स्क्वायर क्लियर तो आम काइनेटिक एनर्जी वर्क डन को आम लिखे काइनेटिक एनर्जी टर्म लिखिले ओके तो समेशन ओवर आई डी आई डी के रो इंटीग्रेशन केते के ओके डी के रो इंटीग्रेशन केते हला के आई ओके के आई फ्रॉम केते ए टू बी ओके तो के आई टोटल पार्टिकुलर समेशन हे जिवो कोन के फ्रॉम ए टू बी तो इज इक्वल टू के बी माइनस ए तो टोटल वर्क डन ए रू बी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जोटा कि हम ऑलरेडी वर्क एनर्जी थ्योरम रे पढि छथि ओके तो change work done is equal to work done by external force is equal to change in kinetic energy. So where A is equal to summation over Ki is equal to summation over half mi vi square is the kinetic energy of the system. Okay. Ka and Kb are the kinetic energy of the system at position A and B respectively. Okay. So आम ये लिखि परिबा conclusion ले the work done on the system उपरे वर्क डन कराला कहा द्वारा by the net force बा net external force equals to the change in kinetic energy, the change in its kinetic energy. Okay, जोटा कि ऑलरेडी हमें जानी चाहिए. Okay, तो हमें वर्क डन को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी एक्सप्रेस कर परिबा. सो देखो WAB can also be expressed in terms of potential energy. Okay, तो हमें एज्यूम कले देखो दी टाइप रो फोर्स सेठी पडुची गोटे हला एक्सटर्नल फोर्स गोटे हला इंटरनल फोर्स. ओके सो बोथ हमें एज्यूम कले both हला कंजर्वेटिव फोर्स. ओके हमें एज्यूम कले बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स. So here we assume that both Fi external and Fik are conservative force. Conservative force जान नथिबो तमे. ओके जदी जान नथिबो कंजर्वेटिव फोर्स म कहि दोछि. ओके कंजर्वेटिव फोर्स हमें कहा कहबा जहा पई जो फोर्स पई हमें गोटे पोटेंशियल लिखि परिबा से फोर्स ता गोटे स्केलर पोटेंशियल लो डेरिवेबल. ओके आ गोटे ऊपर हम बुझी परिबा वर्क डन by a conservative force along a closed path is always zero. गोटे closed path रे यदि conservative force द्वारा हमें वर्क डन करबा ताले इट इज इक्वल टू 0. ओके बा हमें कहि परिबा कॉल F इज इक्वल टू कॉल ऑफ दैट फोर्स इज इक्वल टू जदी 0 हुए ताले हमें सो फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोली कहि परिबा. ओके तो ऑब्वियसली जदी Fi और Fk हला कोन गोटे कंजर्वेटिव फोर्स तमें से माने हला गोटे पोटेंशियल डेराइव हेतिबे. सो हमें लिख परिबा Fi external okay is equal to minus gradient of I कहीं के लिखु छेडी सबस्क्रिप्ट रे of some potential energy U I. ओके एठी कहीं देखो फोर्स आयत पार्टिकल लिखिली. सो U बा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आयत पार्टिकल. ओके पोटेंशियल ऑफ द आयत पार्टिकल. ओके सो I हला कोन ना पोजीशन कोऑर्डिनेट. ओके सो समस्त पोजीशन अलग अलग हेतिबो से अनुसार ग्रेडिएंट अप्लाई होबो. सेत पे हम del I लिखले. ओके तो F I k vector is equal to minus gradient I. Okay U of I k. Okay so delta I कहीं के हमें del I हमें लिख चुंदी
So the gradient operation मु पढ़ेबी ओके मैथमेटिकल फिजिक्स रे पढ़ेबी ग्रेडिएंट कोन कॉल कोन ओके सो एबे तमे बुझी थाओ ग्रेडिएंट बा जोडा हम लिखंती del इज इक्वल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रे del by del x I cap plus del by del y j cap plus del upon del z k cap ओके और del u मतलब del u और जदी u मु ऑपरेट करबी तो del u upon del x del u upon del y del u upon del z k cap okay. Okay, so the gradient operation is performed with respect to the coordinate of the ith part. Okay, okay. ताहले हमें summation work done देखिबा summation over a to b wab is equal to fi dot dri. Okay, then summation over I ab, so fi जगह में कौन पुट करिबा minus grad ui okay dot dri okay is equal to minus summation over I minus बाहर पळा आसला a to b okay देखो डेल्टा आउ dri देखो डेल्टा इज इक्वल टू कोन डेल्टा हम लिख परिबा एठी इन जनरल डेल अपन डेल ri ओके तो ये हला dri सो कैंसिल आउट होला सो ये du हे गला ओके तो हम लिख परिबा dui बा एठी हम लिख परिबा del u dot dri is equal to du okay minus summation over I ui from कोन a to b okay so similarly एटा हम जेम देखेले ओके सिमिलरली हम देखे परिबा similarly summation over I k okay I not equal to k a to b देखो एटी जो फोर्स आसुची ए जो टोटल फोर्स हैला ए टोटल फोर्स गोटे इंटरनल गोटे एक्सटर्नल पई ओके सो हमें एक्सटर्नल पई देखिले इंटरनल पई देखिबा ओके इंटरेक्शन फोर्स तो इंटरेक्शन फोर्स कोन वर्क डन हैला I k dot dri okay is equal to minus of half कहीं गैसला हम कहबी I k 1 to n I not equal to k because interaction force 0 हो जिवो I is equal to k हेले ओके तो f I k dot dri f जगह में कोन लिखबी माइनस ग्रेडिएंट ओके तो सिमिलरली ए फार्मूला पुट करके माइनस ग्रेडिएंट लिखिबा देन हमें लिख परिबा कोन u I k a ru b देखो एटी हाफ काहे कि नेली ओके एटी क्वेश्चन आसीबा हाफ काहे कि नेली बिकॉज़ जेतोले I आउ k बोथ रे समेशन आसीबो तले ए टर्म भी आसीबो देखो मु कहूची तले को टर्म आसीबो u12 u21 तो दीटांको इंटरेक्शन गोटे इंटरेक्शन ताकू दी थर काउंट करा होची तो अधा हाफ हरि देले सब टर्म डबल डबल आसीबो सो हाफ हरि देले हमें गोटे ही टर्म माने सिंगल कोन एंटिटी पाइबा ओके सब थर सिंगल एंटिटी पाइबा डबल और रिपीटेड टर्म पाई परिबा नाही सेति हमें हाफ मल्टीप्लिकेशन करे ओके सो लिखि परिबो एठी तमे the factor half in the RHS side right hand side is due to the both indices I and k okay each member of a given pair is included twice okay तो सेति में हाफ नेले ओके तो देखो WAB is equal to minus summation over I UI गोटे हला AB जोटा फास्ट आस्तिला देन आ गोटे हला माइनस summation over I k I not equal to k आस्तिला UIK AB
ओके दीटा पे हम लिखिले गोटे आसला एटा ऑलरेडी गोटे आसला ओके गोटे गोटे आसला एक्सटर्नल दीटा फोर्स गोटे आसला एटा ओके एटा आसला तो दीटा को हम कंबाइन करके वर्क डन लिखिले दीटांकर ऐड हो जिवो समेशन ओके दीटांक फोर्स पई ओके तो माइनस कॉमन नहीं जिबा ओके समेशन ओवर आई u I a to b plus half summation over I k to n I not equal to k u I k a b ओके तो इज इक्वल टू माइनस देखो u I एठी अछि एठी u I k अछि तो पोटेंशियल एनर्जी आयत पार्टिकल लो इंडिविजुअल प्लस इंटरेक्शन पाई ओके ताहले एटा टोटल हे जिवो पोटेंशियल एनर्जी कोटु कते की ना a टू b ओके समेशन ओवर अछि माने टोटल सिस्टम रह जिवो तो WAB इज इक्वल टू देखो माइनस ऑफ UB माइनस UA ताले हम को लिख परिबा UA माइनस UB एठी हम बाहर करथिले एटा इक्वेशन 2 दे दियो इक्वेशन 1 काहा को दबा ना WAB इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी B माइनस काइनेटिक एनर्जी A ताले एठी जहा वर्क डन एठी भी से वर्क डन ताले राइट हैंड साइड भी समान होबो ओके ओके तो आमे लिखि परिबा combine equation 1 and 2 it is like equation 1 combine equation 1 and 2 we have okay so left hand side रे देखो अछि एठी देखो अछि kb minus ka is equal to right hand side रे कोन अछि ua minus ub तो a को a पाखु नै आसीबा b को b पाखु नै आसीबा ओके तो एठी हला ua प्लस ka एपटो को अछि kb प्लस ub ओके तो देखो मु कहै छी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन a इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पोजीशन a इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पोजीशन b दैट इज द ताले पोजीशन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हे पारे ओके पोजीशन अनुसार किंतु टोटल तांकर समेशन टा सबले कोन हो कांस्टेंट हो सबले नुय केतले ना जदी फोर्स टा कोन दिबो कंजर्वेटिव फोर्स एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स कोन ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्प्रिंग फोर्स ओके so write down where E is equal to U plus K kinetic energy plus potential energy is the total energy of the system full stop okay so conservation theorem जदि पचारिबो ताले कोन लिखिबो वर्डिंग रे so write down if a system of particles is acted upon by conservative force then the total work done by total mechanical energy of the system remains constant with time okay this is the conservation theorem of energy okay so next class रे हमें पढ़िबा conservation theorem of angular momentum then हमें किछि प्रॉब्लम करबा जहा भी पढ़िले केमती conservation theorem यूज करके हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करूचंती then हमें continuous system रे moment of inertia calculation okay so thank you everyone